Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to tutorial number 9. So I would suggest you guys to open up the tutorial, the question paper from LMS. It's saved in the tutorials folder, and so that you can read the question side by side and it gets easier for the both of us. So let's move on to the first question. So the first question, I'll just read it out for you guys. So the first question says that an elevator system can be divided into two independent units. An electrical unit whose lifetime can be modeled as an exponential variable with a mean value of 4 years, and a mechanical unit whose lifetime can be assumed to have a uniform density between 1 year and 9 years. For the elevator system to function, both the electrical and mechanical units must be functional. Once the unit fails, we do not try to repair it. Okay. So the first question says that what is the probability that the elevator system will stop functioning in the first year after installation? So you know that the elevator system's function depends on two things. Okay? First is the life of the mechanical units, and the second is the life of the electrical unit. So you know that if you look at the life of the electrical unit, okay, so you know that it is basically exponential variable with exponential random variable with a mean of value of 4 years. Okay, so lambda is 4, so 1 over lambda is 1 over 4, e minus 1 over 4 x, right? So L, okay? So because lambda e minus lambda x, right? And the other part is the mechanical unit, which is basically your it's a uniform density. It has uniform density, so it will be 1 over b minus a. So b is 9 minus 1 is 8, right? Where m is between 1 and 9, right? In fact, it equals to 9, okay, because it's strictly between 1 and 9, right? So these are the two things that we have. वो हमसे पूछा है कि what is the probability that the elevator system will stop functioning in the first year after installation. हमें पता है कि जो ये mechanical unit जो है वो first year में fail नहीं होगा, तो इसीलिए we will not have to look into here, but we know that the electrical unit can fail within the first year. So the probability that the elevator system will stop functioning in the first year depends on the probability that that the electrical unit, this part, fails in the first year. So that would be basically the probability that your electrical unit lasts for less than a year. Okay, so the small l is the number of years that the electrical unit lasts, right? So that would be what? So basically ये continuous variable है, ठीक है, क्योंकि exponential variable तो आप उसको integrate करोगे 0 से 1 में, ठीक है, less than 1 है, e minus 1 over 4 l dl, right? तो इसको इंटीग्रेट हमने किया तो हमारा क्या आ जाएगा? सो एक्सपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है? ओके सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट द 4 हियर, राइट? 4 यहाँ भी है. तो ये आ जाएगा 1 over 4 e minus 1 over 4 l into डिवाइड होगा इसके एक्सपोनेंट से, सो डिवाइड होके क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा. ओके, और इस पे आपकी लिमिट्स लगेंगी 0, 0 और 1 की, राइट? तो 4 यहाँ कट जाएगा, so it will be minus, e to the power minus 1 over 4 l, और इस पे लिमिट्स लगी हुई होंगी. Zero, sorry, so it will be minus e to the power minus 1 over 4 minus 1 over, oh sorry, stops working again and again. So e to the power minus 1 over 4 l minus ये होगा, और इस पे आपका 0 और 1 लगी हुई होगी. इस पे let's just put that in. So if you put the limits in, so what do we get? It will be 1. It will give us so it will give us 1 minus e to the power
minus 1 over 4. So that's roughly 0.2212, and it's the probability that our system fails within the first year. Okay, now moving on to question number part B. So it says that what is the probability that the elevator system will be functioning after 10 years, right? So वो कह रहा है कि what is the probability that आपका जो elevator system है, it will be functioning after. So V is the total amount of life that it has is greater than equal to greater than 10, right? So आपको पता है कि जो जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है वो 9 इयर्स में एटलीस्ट फेल हो ही जाएगा, राइट? तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहे भी लेकिन मैकेनिकल सिस्टम आपका 9 इयर्स में फेल हो जाएगा. सो दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. दैट मींस इट इज बाउंड टू फेल in 9 years at least, right? So this will be 0. Part B is going to be 0. Then it asks you what is the expected lifetime of the mechanical unit. So expected lifetime of the mechanical unit आपको कह रहा है, सही है. So M is your mechanical unit की वो आ गई. So basically you know it's uniform distribution. It's a uniform distribution. So you know that उसकी क्या होती है, expected value B plus A, which is the endpoints divided by 2 होती है. So that means 9 plus 1 divided by 2, which is 5. So the expected lifetime of the mechanical unit is 5 years. Now moving on to the next part. Okay, so moving on to question number 1 part D. It is saying that it's asking us that what is the expected lifetime of the elevator system. We know that the elevator system fails when either of the electrical system or the mechanical system fails. ठीक है, so basically जो आपका electrical system है उसकी अगर लाइफ टाइम आप v लेते हो, ठीक है, स्मॉल v, ठीक है. So अगर आपको निकालना हो expected lifetime of the elevator system, ठीक है, so basically it's a function of two things, ठीक है. It's a probability of the minimum of the lifetime of L and M, ठीक है. पहले जो फेल हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू v, ठीक है. सो तो इलेक्ट्रिकल आपका एलिवेटर सिस्टम आपका फेल हो जाएगा, ठीक है. सो इनको हमने 1 माइनस इस तरह करके लिखा है L M greater than v, right? सही है. We know that L and M are independent variables, right? So हम इसको they can be written as a product of each other, right? So ये हो जाएगा P P L greater than V into P M greater than V, right? और आपको पता है L greater than V it can be written as इनको हम इनके इंडिविजुअल PDFs में लिख लेते हैं. So 1 minus F L V into 1 minus F M V, right? तो इसको हमने फर्दर लाइक ब्रेक डाउन किया तो हमारा आ गया कि F L V plus F M V minus F L V into F M V is just algebraic manipulation and multiplication, ठीक है. ये सारे PDFs आपको गिवन है, ठीक है. अब आपको पता है कि 3 चीजों में वो हो सकता है, देयर आर लाइक 3 टाइम्स जो हो सकते हैं, ठीक है. एक तो वो पहले साल से पहले ही फेल हो जाए, राइट, ठीक है. एक ये आपका इंटरवल हो गया, एक आपका 1 से 9 साल के बीच में फेल हो जाए, ठीक है, ये दूसरा इंटरवल हो गया, ठीक है. और तीसरा के ग्रेटर देन 9 हो, ठीक है, सही है. तो अगर लेस देन 1 होगा तो आपको पता है कि मैकेनिकल सिस्टम तो लेस देन 1 में नहीं फेल होगा. तो आपका उस वक्त आपका पीडीएफ सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट है. ये हम पीछे वाले से निकाल लेंगे, ठीक है. हमें पता है कि पीछे हमने निकाला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इज लेस देन 1 ये थी. तो बेसिकली 1 की जगह अगर हम बी डाल देंगे इधर, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, हमें ये आ जाएगा गिवन योर बी इज बिटवीन 0 and 1. सो नाउ for b is between 0 and 1 तो आपका सिर्फ एफ वी हो जाएगा, ठीक है. आपका एफ वी जो है आपका सिर्फ एल पे डिपेंड होगा, 1 माइनस ई माइनस वी ओवर 4, ठीक है. अच्छा, अब अगर ठीक है, सो दिस इज योर सॉर्ट ऑफ योर पीडीएफ, सही है. इसको आपने अगर इसका पीएमएफ निकालना है तो सिंपली आपने क्या करना होगा, आपने उसको डिफरेंशिएट करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 over 4 e minus v over 4, राइट, ठीक है. अब 1 से 9 के बीच में दोनों फैक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल को भी कंसीडर करना, वो भी फेल हो सकता है, मैकेनिकल भी फेल हो सकता है, राइट. तो इसके लिए आपका बेसिकली दोनों को आपने लेना है. तो इसके लिए नाउ हमारा ये वाला आ जाएगा,
So this part, right? This one will be considered. ठीक है, so इसका basically इसको हम लोग sort of उसमें लिख रहे हैं, ठीक है? Let's just write it in words. So it will become 1 minus e minus v over 4. That's your L part, L का PDF plus 1 over 8 v minus 1. ठीक है, ये आपका m का पार्ट है minus 1 minus e minus v over 4 और 1 over 8 v minus 1. 1 over 8 v minus 1 इसलिए आ गया because you know कि ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है. ठीक है, तो इसका बेसिकली आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा जब आप इसको सॉर्ट ऑफ अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस v minus 9 over 8 e minus v over 4. ठीक है, और ये आपका बेसिकली इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका आ जाएगा 13 माइनस वी ओवर 32 ई माइनस वी ओवर. ठीक है, अब आपको पता है जो अगर v आपको ग्रेटर देन 9 होगा आपका टाइम, ठीक है, सो बेसिकली आपका इट्स बाउंड टू फेल. ठीक है, तो आपका जो पीडीएफ है बेसिकली आपका वो 1 हो जाएगा, राइट? तो आपका जो सॉर्ट ऑफ जो आपका सीडीएफ है पीएम हाँ पीडीएफ है वो आपका 0 हो जाएगा, राइट? क्यूमुलेटिव वाला 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा. सो इट डजंट रियली मैटर. अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपने आराम से निकाल ली. ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने आराम से निकाल ली. एक्सपेक्टेड वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता है. सो इट्स गोना बी लाइक ई वी इज इक्वल्स टू वी एफ वी. ठीक है, इसको आपने वी वी, ठीक है, सो इसमें आपने निकाल लिया. इसमें दो आपके हैं, एक 0 से 1 के बीच में और एक आपका 1 से 9 के बीच में. इन दोनों के हमने इंडिविजुअल ऊपर निकाल लिए हैं और दोनों को आपने इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर समवॉट आ जाएगा 2.6532. ठीक है, so this is your average expected number of years. ठीक है, expected lifetime of your elevator. So now moving on to part E, right? So part E में आप कह रहे हैं कि if the elevator is known to be functioning 1 year after the installation, what is the probability that it will stop functioning within the 2 years of installation, right? तो वो कह रहा है कि probability कि within the 2 years मतलब less than 2 होना चाहिए, given that वो पहले साल function कर रहा था. It's functioning after the first year. सही है, तो ये basically given वाला आ गया. तो इसमें basically probability of V, ठीक है, वो पहले 2 साल में function कर रहा है, 1 और 2 के बीच में function कर रहा है. ठीक है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी v इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो इन दोनों केसेस में इन दोनों केसेस में व्हाट यू मेंट टू डू इज, ठीक है, अब v बिटवीन 1 एंड 2 आपने निकालना है. तो आपको पता है इसका ये क्या होता है, f2 माइनस f1 होता है. ठीक है, इसमें लेकिन आप कौन सा ले रहे हो, हमारा पीडीएफ क्या होगा, हमारा पीडीएफ अब दोनों का होगा, एन और एम दोनों का होगा, बिकॉज 1 और 2 के ईयर स्पैन में दोनों फेल कर सकते हैं, राइट? सो यू विल टेक अप जो दूसरा वाला पार्ट था, राइट? और 1 और 2 ईयर्स में दोनों फेल कर सकते हैं. और नीचे आपका 1 माइनस, बिकॉज वो पी वी ग्रेटर देन 1 था तो 1 माइनस एफ वी 1 होगा क्योंकि वो लेस देन 1 होगा. ठीक है, सो एफ वी 2 आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी okay, हाँ. So one more thing to note here is that it will be because 1 और 2 के बीच में होगा. आपको पता है कि 1 और 2 के जब बीच में होता है तो आपका जो पीडीएफ होगा वो आपका हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस 7 over 8 ई माइनस 7 over 8 ई माइनस 2 over 4, राइट, माइनस 1 प्लस ई minus 1 over 4 divided by e minus 1 over 4. So basically this will give you 0.3185, which is the probability that this will stop functioning. Okay. So basically 7 over 8. Okay, sorry, there's a bit small mistake here. यहाँ 7 over 8. ठीक है, so basically इसमें मैंने यही किया है. So what I've done here is कि मैंने FV2 minus FV1 निकाला है. ये आया किधर से है, ये आया इस तरह से है कि हमें पहले से हमें पता है, we know for a fact that जो आपका
जो आपका एफ वी वी बिटवीन 0 एंड 1 है वो आपका ये है, राइट। तो इसीलिए आपने बिकॉज 2 - 1 करना है तो आपने इसको यूज कर लिया है, बिकॉज v इज लेस देन 2 एंड गिवन दैट v इज ग्रेटर देन 1। सो उस वाले स्पैन में आ रहा है तो हम लोग उसको इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स ओके, so now moving on to question number 2. We know that I'll just read up question number 2. So the question number 2, it states that the random variable x and y have a joint density. Okay, so question number 2 में आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक joint distribution है, ठीक है। It's 12xy 1 - x और y के आपको बाउंड्स दिए हुए हैं, दोनों x और y जो है वो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि और या फिर अदरवाइज वो 0 है, ठीक है। So they're equal to 12xy 1 - x between when x and y both are between 0 and 1, otherwise they're equal to 0. The density is 0. Okay, so पहले पूछा हुआ है कि are these x and y independent? So yeah, you know that if two variables are independent, then the joint distribution is a product of their marginal distributions, right? So this is what you intend to prove, right? So इसके लिए first of all आपने marginal distributions दोनों के निकालने चाहिए. So let's just start with marginal distribution of fx, right? So ये जो है basically ये क्या निकलेगा, सही है। ये आप कैसे निकालोगे कि आप जब joint distribution को with respect to आप dy sum कर लोगे, like you're summing up all the y so that you're only left with x, and you know that y 0 and 1 के बीच में ही, otherwise वो 0 ही है, right? The density is 0. So ये basically आप आपका जो joint distribution है उसको आप उसकी y's को sum up कर लोगे between 0 and 1. So summing up here, because it's continuous, means integrating. So fxy 12xy को आपने इंटीग्रेट करना है, 12xy 1 - x को आपने इंटीग्रेट करना है with respect to y between 0 and 1, right? So this will be fairly simple. So it will be 12x 1 - x y square over 2, right? और फिर इस पे आपने 0 और 1 की लिमिट्स लगा दी, okay? So once you're done with that, so I'll just simplify this. So this will be 6, right? और जब 1 डालोगे इसमें तो 6 1 - x बन जाएगा, और 0 सॉरी मैंने लिमिट्स उल्टी डाल दी हैं, तो just like limits here, they're just like ulta 1 and 0, right? So जब 0 डालोगे आप y की जगह 1 डालोगे तो 6 1 - x बन जाएगा, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा. So basically इसका आंसर जो है, जो marginal distribution है with respect to x, is basically um it's basically 6x 1 - x, right? 6 1 - x, in fact 6x होगा, यहाँ x हम भूल गए. So it's basically 6x 1 - x, right? Then likewise हमने marginal distribution of y निकालना है, तो उसमें बस ये फर्क होगा कि आप because you just need the marginal distribution with respect to y, you be summing up all the x's. So basically this will be your joint distribution summed up over all the x's, that is integrating it over 0 and 1, but with respect to dx this time, right? So this will be 12y. Okay, so this will be so if I integrate this with respect to so this will be 12xy 1 - x dx से आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में. Okay, in fact like it's just 0 और 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है, ठीक है. तो इसको अगर आप खोल लोगे तो ये हो जाएगा 12xy - 12x square y. So that will be 12x square over 2y minus 12x cube minus 12x cube y over 3, right? इसको आपकी लिमिट्स लगा देनी है, 1 और 0, right? So this will be so the answer here will be 2y, right? If you just put in the limits, so the marginal distribution is 2y,
Okay, so now we just have to check independence. So you know आप fx मर्ज fx और fy को मल्टीप्लाई कर दोगे. So fx क्या था आपका 6x 1 minus x था 6y और fy आपका 2y था. दोनों को आपने इक्वेट कर इक्वल्स टू किया तो क्या आ जाएगा just 12xy minus 12x square y. So जो आपके पास जो एफ एक्स वाई दिया हुआ था दैट वाज 12xy. So 12xy को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, so ये जाएगा 1 minus x, right? So this is the same as the fxy that was given, so we can say that x and y are independent, right? So moving on to part B of this question. So part B and part C tell you to find the expected value with respect to x and y. So you know that हमने already marginal PDFs तो निकाल लिए, right? So we know the marginal functions, so it's easier for us. तो आपको पता है कि expected value क्या होती है? Ex is basically integral 0 and 1. वैसे negative infinity to infinity होता है, but इधर सिर्फ 0 and 1 के लिए defined है, so we just write that x into fx, marginal of x. सही है? So basically it will be 0 and 1. और x और marginal हमने अभी निकाला, that was 6x 1 minus x. Okay, so once you're done with that, that would be 6x square minus 6x cube. इसको आपने इंटीग्रेट करना है 0 1 के बीच में with respect to dx. Don't forget to write dx, right? So ये हो जाएगा 6x cube over 3 minus 6x 4 over 4 0 1. Okay, sorry, 1 and 0, right? So इधर हमने further इसको simplify किया, मतलब लिमिट्स लगाई, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा so basically be 1 over 2 minus 2 minus um okay, so that would be, so if I just further do that, so ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 2 3 जा, so basically 1 डालोगे तो 2 minus 3 over 2 हो जाएगा, so that basically gives you half, right? So that's your expected value with respect to x. Likewise हम y करेंगे, but इसमें marginal of y से multiply हो जाएगा और y variable होगा हमारा, so fy 0 1 dy, right? So इधर हमें पता है कि y into 2y, marginal of f2y था, इसको 0 1 integrate करना है, so that would give me 2y cube over 3 limits 1 0, so that is 2 over 3. So आपका expected value of y है 2 over 3 आ गया. Now moving on to the next two parts, तो हमें simply कह रहे हैं variance निकालो with respect to x and y. So you know variance का formula. So variance of x जो है वो basically क्या होती है? It's basically e x squared, right? The second moment at x minus ex whole square, right? So ex square हमने निकालना है और likewise अगर y निकालेंगे तो ey square निकालना है, and ex और ey तो हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, so it's going to be really simple. So let's just do ex square. ठीक है, ex square simple उसी तरह से निकलेगा x square और marginal of f at x and 0 1 पे इंटीग्रेट होगा. वैसे नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, बट इधर बिकॉज डिफाइंड आपका 0 1 के लिए इसीलिए 0 1 पे होगा, राइट? सो ये आपने कर लिया x square fx and x square और fx आपको पता है क्या था 6 x 1 minus x, right? So once I was done with that, once I'd be done with that, integrate 0 1 dx, so that would be what? So basically पहला वाला टर्म बन जाएगा 6x क्यूब और दूसरा बन जाएगा minus 6x 4. So 6x क्यूब minus 6x 4, तो आपने इंटीग्रेट करना है 0 1 के बीच में dx पे. So basically ये 6x 4 over 4 हो जाएगा minus 6x 5 over 5. लिमिट्स लगानी है इस पे हमें, 1 और 0 की, राइट? So ये आपका बन जाएगा
1/4 minus 1/5. So अगर आप 1/4 minus 1/5 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर it would be 1/20, right? So it's gonna be 1/20. Let's see. It's gonna be 1/20. Okay, let me just check it once again. 6/4 minus 6/5. Okay, so that was correct, right? So cube 6/2 minus 6. Okay, so यही हो रहा है, इसका 1/20 है. So 1/20 है, because वेरिएंस निकाल रहे हैं. So basically आपको 1/20 minus 1/4 1/2 whole square करना होगा. ठीक है, so that gives you 1/20 minus 1/4. That is basically minus 1/5, right? Okay, so now moving on to part E. पार्ट ई में भी हमने सेम ही तरीका किया है, वेरिएंस ऑफ y निकालनी है. यूज द सिमिलर मेथड एक्सेप्ट कि हम लोग इधर y स्क्वायर 2y करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे टू गेट ey square. Just 1 second. So this will be ey square minus ey whole square, right? So ey square निकालने के लिए आप सेम ही चीज करोगे. ठीक है, so you will do y square 2y which was your fy 0 1 dy, right? तो उसको उसी तरह से करोगे, ey निकला हुआ है उसको होल स्क्वायर करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे and you'll get the answer. So this is done. Now moving on to question number 3. So question number 3 is states that a random variable x y is said to be uniformly distributed over a region R in the plane if for some constant C joint density is this. ठीक है, show that 1/C is the area of the region R. Okay, so basically question number 3 में आपको जो है एक joint distribution function दिया हुआ है fxy. It's C when xy is in R, right? Like एक disk में एक R is basically a region in the plane and 0 otherwise, right? So 0 otherwise. So show that the area of the region is R, right? So आपको पता होना चाहिए कि you know that it's important for us to realize the fact that जो जो area of the region होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस region का area क्या होगा, right? इस region का area जो होगा वो basically आपका AR होगा, right? वो हमसे बोल रहे हैं कि show that the area of the region is 1/C, right? So you know that the area of the region, किसी भी आपको region का area निकालना होता है तो आप उसको double integrate करते हो, right? उस region पर, right? dx dy, right? अब हमें पता है कि from the properties of the PDF that अगर जब PDF को अगर हम लोग double integrate करेंगे उसका sum जो है वो 1 होना चाहिए. This is the property of the PDF. It should add up to 1, right? अगर आप दोनों पे integrate करोगे, you're summing up both the x's and y values, it should add up to 1. So you know for a fact that the PDF is C everywhere, right? So C dx dy equals to 1, right? C हम बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल अंदर आ गया तो बेसिकली ये आपका A बन जाएगा, AR बन जाएगा, equals to 1, right? So इससे आपका AR is equals to 1/C आ गया. सही है, तो इसमें fairly easy to the sense कि हमने property use की है PDF की कि it sums up to 1, right? The joint distribution sums up to 1 if you integrate along both the x and y's, and then you've used the formula for the area of a disk, right? Area of a region. तो आप दोनों दफा integrate करोगे तो area आ जाएगा, फिर आपने use कर लिया. अब part B जो है वो आपको कह रहा है show that the x and y are independent with each being distributed uniformly over -1 1, right? तो independent show करने के लिए आपने वही किया है जो हमने पहले किया था. हमें show करना है कि joint distribution जो है that's equal to the product of marginal distributions, right? So for that हम लोगों ने किया है okay,
For that, what we're going to do is, sorry. So for that, what we're going to do is, okay. So now we are given the fact that हमारे पास एक यूनिफॉर्म रीजन है -1 से 1 तक, ठीक है. तो रेक्टेंगुलर रीजन है, सही है. सो बेसिकली इस तरह का रीजन है कि x भी -1 से 1 तक है, बीच में है, और y भी आपका -1 से 1 के बीच में है, सही है. सो बेसिकली इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? द एरिया ऑफ द रीजन is 4, right? So how is it? Because like ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, so the area will be 4. So area of the region is 4. सही है. So हमने पीछे क्या था कि area is 1 over c. So basically आपका c है 1 over 4, right? अब हमें शो करना है कि भाई ये इंडिपेंडेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, सही है. So we know for a fact that अगर हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा बेसिकली जो c है, this is what f(x, y) right now. ठीक है. So हमें अगर हम fx खाली निकालेंगे, so we need to sum it up. We have to integrate with respect to dx and sum it over -1 and 1. So if we do that, we get 1 over 4x 1 and -1, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा 1 over 4 plus 1 over 4, that is 1 over 2, ठीक है. Likewise अगर आप y का करोगे तो भी 1 over 2 आ जाएगा. So then because x की जगह y आ जाएगा, so then you can say that 1 over 2 into 1 over 2 is 1 over 4. Thus fx fy is equals to fxy in this case when they are uniformly distributed variables and they are independent. Now moving on to part C. Part C is a little like sort of intuitive in the sense that it says that the probability that a certain point lies in a region is xy in a region. ठीक है. Region हमें दिया हुआ है. What is the region? सही है. So region is x square plus y square less than equal to 1, right? So basically जो probability lie region में करने की होती है ना, वो इस region की area होती है into the PDF, right? So PDF हमें पता है 1 over 4 है. इस region का area क्या होगा? Pi r square, right? So circular disc, सही है. Like it's a circle in fact. So it will be pi r square 1 square, right? Because the unit circle था, the center is 0. So basically ये आपकी हो जाएगी pi over 4. So the probability of a point to be lying in this particular region is pi over 4. So now moving on to the last question, which is question number 4. So question number 4 भी easy है. This actually addresses conditional probability. So हमें कह रहा है कि joint density function दिया हुआ है f(x, y) is equals to x e minus x y plus 1, और यहाँ x y आपके दोनों पॉजिटिव हैं. Okay. Find the conditional density of x given y and y given x, right? So आपको पता है कि उसके लिए conditional density का फॉर्मूला क्या होता है? So conditional density का फॉर्मूला होता है basically it is if I write it down, so basically अगर x given y आपने करना है, sorry, x given y अगर आपने करना है तो it's gonna be fxy divided by marginal of y, right? Likewise अगर y given x करना है, going to be fxy, right, divided by fx, right? तो इसके लिए हमें marginal distributions निकालने हैं, right? और हमें joint distribution तो दिया हुआ है. So again हम लोग marginal distributions निकालेंगे same ही तरीके से. So you know that अगर fx निकालना है, that's going to be fx, y dy summing over y, और इधर x y दोनों greater than 0 है, so y will be from 0 to infinity, right? So you're going back to the question. It's gonna be okay, so it's gonna be x e minus x y plus 1. This is the joint distribution हमें दिया हुआ था क्वेश्चन पे, 0 infinity dy, right? अब with respect to dy आपने इंटीग्रेट करना है, तो आपका आंसर बेसिकली आ रहा था minus e minus x y plus 1, इसको y equals to infinity और y equals to 0, सही है. So जब इसको मैं लिमिट जब डालूंगी अंदर, infinity डालूंगी तो 0 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर जब 0 डालेंगे इसके अंदर y की जगह तो हमारा आ जाएगा -x. So
ये हो जाएगा e to power minus x। तो इसके अंदर जब हमने निकालना होगा y given x निकालना होगा तो आराम से निकल आएगा। कैसे निकल जाएगा? हमें y given x के लिए हमें चाहिए fxy और fx, राइट? fxy तो हमें दिया हुआ है in the question, so fxy was what? So fxy was x e minus x y plus 1, और हमें fx हमने अभी निकाला था e minus x, राइट? इसको हमने काट लिया, मतलब e basically just some algebraic manipulation, and ये आपका आ जाएगा e x e minus xy, so that's your f y given x, right? Likewise हमें x given y निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें marginal of y निकालना पड़ेगा। Marginal of y निकालने के लिए again we will be using the joint PDF, which is x e minus x, oops, y plus 1, sorry, and we'll be summing it over the x's or all the x's. Oops. Sorry again. Okay. And again एक्सिस का भी यही था, नेगेटिव इन्फिनिटी, सॉरी 0 to infinity, सही है। सो अब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट जब आप कर लोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ वाई का आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा so the answer would be, let's see, so the answer would be minus x over y plus 1 e minus x y plus 1 0 infinity 0। तो फर्दर आप वो करोगे okay, so let's just leave the integration, it's a little complicated, so आप लोग ये घर पे कर सकते हो आराम से। तो ये हो जाएगा 1 over y plus 1 whole square, that's your fy। again जब f x given y निकालना होगा तो joint PDF आप पकड़ोगे, which is x e minus x y plus 1, और नीचे आपका divide by 1 over y plus 1 square जाएगा, that's going to be whole square, right? So this is your this is going to be your x given y, right? So this is the end of the tutorial. I'll just stop recording.